Hi guys, welcome to this next session on my course on Unacademy CAT-alyst, in which we are doing this selection criteria for IIM Bangalore. A lot of you have this question कि मेरा अहमदाबाद से कॉल आएगा कि नहीं, बैंगलोर से कॉल आएगा कि नहीं. स्पेसिफिकली AB के कॉल में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस रहते हैं और बिफोर स्टार्टिंग प्रिपेयरिंग बहुत लोग मेरे से पूछते हैं ये बात कि अहमदाबाद से कॉल आने का चांस है कि नहीं, बैंगलोर से कॉल आने का चांस है कि नहीं. तो एक फैक्ट चेक करते हैं. विल डू अ फैक्ट चेक टुडे इन दिस लेसन. वी विल ट्राई टू जस्ट सी कि व्हाट आर योर चांसेस अगर तुमको IIM बैंगलोर का सिलेक्शन चाहिए. IIM अहमदाबाद का मैं अलग से वीडियो बना चुका हूँ. तो IIM अहमदाबाद वाला, तो उसको आप देख लीजिएगा इस चैनल पे. वहाँ पे हम लोग ने देखा था IIM अहमदाबाद में, वी हैड सीन दैट वन ऑफ द कंस्ट्रेंट्स इन IIM अहमदाबाद, आई मीन ऐसे तो CAT has 65% वेटेज इन IIM अहमदाबाद एंड 35% वेटेज इज for your 10th, 12th and graduation score and your work experience, 10, 10, 10 and 5%. But एक criteria था which is not very good for people who have not done too well in 10th and 12th. That criteria was that you had to have a minimum of 80% in 10th and 12th. So that was one of the criteria that actually created a problem or creates a problem for a lot of people when they are trying to aspire for Ahmedabad. Let's see whether Bangalore has something like that. Yeah, Bangalore mein you can still aspire even if you have not done very well at the same. अहमदाबाद भी तुमको चांस देता है. एक अच्छा हुआ, एक खराब हुआ. एक में 90 आया, दूसरे में 75 आया, 67 भी आ गया. तो 80 plus as far as you are 80 plus overall in 10th and 12th combined. They don't check both. So 10th 12th combined अगर 80 plus है तुम्हारा, तो then you are eligible for Ahmedabad. तो बैंगलोर को देखते हैं. Let's see what the this thing is. Before that, this Unacademy Combat is a scholarship test that happens every Sunday at 12 p.m. And the next every Sunday coming Sunday 12 p.m. पे हमेशा होता है. And इसमें the prize is worth 55 lakhs. It's India's biggest weekly scholarship test for CAT aspirants, and it's a gamified kind of a contest, and it's called CAT Combat. And the prizes include 1 year CAT Plus subscription for ranks 1 to 3. Ranks 4 to 10 get a 75% scholarship. Ranks 11 to 50 get a 50% scholarship. Rank 51 to 200 gets a 25% scholarship. And to access Unacademy Plus, you can scan the code that is shown on the screen right now. उसको आप scan कर सकते हो. The scan code which is shown on the screen, and you will have to use a promo code to enroll. वो जब scan करेगा तो promo code मांगेगा. तो उस promo code में you can use this promo code Sharma CAT Life. इसको use कर लोगे तो तुमको you will get access to the Unacademy Plus to the Unacademy CAT Combat scholarship test, and you can take that test, and hopefully if you become successful in that test, we'll see you in our live classes on Unacademy. Right, so there are other promotions, but before that, let me just go ahead and explain the IIM Bangalore criteria. So I have a file which is directly downloaded from the IIM Bangalore website. So I'll just look at that file, and we'll just try to analyze our chances based on a discussion of that file. So I'll keep my whiteboard. As a teacher, I'm most comfortable on my whiteboard. So we'll just look at this document. So this document, of course, right now 22-24 का details आया नहीं है, but ज़्यादा change नहीं करता है from one year to the next, because more or less it's stable. A couple of things here or there might change in the fine print, but more or less everything remains stable. So we can look at this as a guiding document to what will be the structure of your selection construct, and do you stand a chance. So all this is blah blah blah. It has got various processes. It seeks to identify the most promising candidates. So यहाँ पे कुछ डेटा नहीं मिलने वाला हम लोग को. और ये फाइल तुम अगर गूगल पे जाओगे, IIM Bangalore selection criteria गूगल पे डालो तो दिस इज़ द फर्स्ट सर्च दैट कम्स ऑन टॉप, और इसको अगर क्लिक करोगे तो यू कैन ऑल्सो डाउनलोड दिस फाइल. ठीक है ना. IIM Bangalore PGP admission process. PGP is a postgraduate program. That's what they call the MBA at the IIMs. And एक पॉइंट इन्होंने लिखा है यहाँ पे,
IIM Bangalore has found over the years that students who perform well academically, इसको थोड़ा सा expand कर देता हूँ मैं. IIMB has found over the years that students who perform well academically in the PGP are typically those who have a consistently good academic record during the secondary school, higher secondary school and graduation level. Besides exhibiting sufficiently high aptitude as measured by the CAT. So यहाँ पे बहुत clearly उन्होंने दिया कि हम लोग चारों चीज़ देखेंगे. 10th, 12th, and consistency of academic record we'll see. 10th, 12th, graduation, and we'll also look at your CAT aptitude performance. So therefore IIMB uses multiple parameters, namely academic performance in 10th, 12th grades, graduation programs, as well as the candidate's section-wise scores in the CAT to judge the suitability of a candidate for the PGP. And relevant work experience, if any, is also given weight in the selection. So broadly, your chances of IIMB then depend on 5 things. Your 10th score, your 12th score, your graduation score, your CAT score, and your work experience, if any. Right, and they are justifying this by talking about evaluation by multiple criteria is also consistent with empirical research on recruitment and selection that shows greatest efficacy of recruitment processes that use multiple criteria. ठीक है, and so all this is the introduction part. You can read this by downloading this file, as I said. So then it talks about a two-phase process. This is the first part of what you need to understand. IIMB adopts a two-phase selection process, and accordingly these selection criteria applied in 2 phases. The first phase of the process is applied to all eligible candidates who appear for CAT 2020 to determine candidates for a personal interview, and candidates who are selected for PI will be additionally required to take a VAT and written ability test on a topic to be provided by IIMB. So what we are talking about here is that there is phase 1 of the selection process, और phase 1 के बाद, phase 1 के through they will shortlist you for the PI, and also they'll shortlist you for the VAT, which will be a writing and ability test based on a topic given by IIMB. So the question then arises, what is the phase 1 criteria? They have already mentioned that they are going to look at 5 things: 10th, 12th, graduation, CAT score, and work ex if any. तो अब हम लोग को पता ही करना है कि इसमें क्या वेटेजेस हैं एंड हाउ डू दे कंसिडर, एंड लाइक IIM अहमदाबाद उसमें कोई बेसिक मिनिमम है क्या. ठीक है, तो इंटरव्यू में क्या करेंगे एंड ऑल दोस थिंग्स वो अभी हम लोग के इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव नहीं है ना. एंड VAT submission will be evaluated separately, etc. The score of the VAT interview and pre-PI scores will be cumulatively in the second and final phase. The second phase को बाद में देखेंगे हम लोग, maybe not in this video, या इस वीडियो में देखेंगे भी तो बहुत ही शॉर्ट में. पहला फोकस हम लोग का phase 1 पे आ जाता है. ठीक है, and they have made an important point कि sufficient candidates are shortlisted at each stage from each social category. So this is about reservation. This is not like the IIM Ahmedabad breakdown where they were breaking down typically people, they are breaking down in their respective academic categories. यहाँ पे they are breaking it down on the basis of course they have to do that being a government aided institute. So reservations तो रहेंगे. So that is what they are talking about. So phase 1. तो phase 1 का पार्ट देखते हैं आप. A first shortlist is prepared comprising candidates who have secured a predetermined minimum score on all sections of CAT 2020.
So only one condition here. Candidates obtaining a positive greater than 0 raw score at the minimum will only be considered. So the percentile cutoff scores applied to CAT 2020 as part of the admission process are shown in table 1. All the subsequent processing, standardization and selection are limited to candidates selected to the first shortlist alone. So phase 1 is getting broken into a first shortlist. The interpretation of this is that phase 1 is getting broken into a first shortlist. Is getting broken into a first shortlist. और फर्स्ट शॉर्टलिस्ट का क्राइटेरिया ये है VRC, DILR और क्वांट्स का परसेंटाइल एक क्राइटेरिया तीनों का, एंड ओवरऑल परसेंटाइल इज ऑल्सो क्राइटेरिया फर्स्ट शॉर्टलिस्ट के लिए. And one more criteria is that basic raw score. So even if you meet all the percentiles required, but suppose तुम्हारा क्वांट्स में जैसे यहाँ पे अगर देखो तो क्वांट्स के लिए जनरल कैटेगरी में द शॉर्टलिस्ट इज एट 75, द फर्स्ट शॉर्टलिस्ट के लिए कट ऑफ इज 75. बट बाय चांस अगर 75 परसेंटाइल तुमको आया हुआ है लेकिन रॉ स्कोर 0 से नीचे है, 0 से नीचे है, नेगेटिव या नॉन पॉजिटिव रॉ स्कोर है, तब तुमको नहीं लिया जाएगा. ऑल्दो दैट्स वेरी रेयर. 75 परसेंटाइल अगर तुम लाए हो तो बेसिकली पॉजिटिव रॉ स्कोर तो होगा ही. But sometimes in the PWD candidates or in the ST candidates where the cutoff are slightly lower, 55% ही cutoff, percentile ही cutoff है QA का for example, तो वहाँ पे कभी कभी क्या होता है कि PWD में सिर्फ 50 परसेंटाइल cutoff है, तो कभी कभी क्या होता है 50 परसेंटाइल किसी एग्ज़ाम में अगर बहुत टफ एग्ज़ाम होगा तो रॉ स्कोर 0 से नीचे चला जाएगा 50 परसेंटाइल के लिए. तो वैसे केस में फिर उसको नहीं लिया जाएगा, उन्हीं को लिया जाएगा जो 50 के ऊपर किया ला रहे हैं. सो द परसेंटाइल्स जनरल के लिए 80 VRC. सो यू कैन सी VRC में थोड़ा ज़्यादा एम्फोसिस है इनका स्टेज में एटलीस्ट. 75 इन DILR एंड 75 इन क्वांट्स एंड एग्रीगेट ऑफ 75 ओवरऑल. जबकि OBC में इट्स ए 10% ड्रॉप अक्रॉस द बोर्ड. OBC और EWS को ऑलमोस्ट सेम रखा गया और ये एनेक्डोटली और एक्सपीरियंशली भी पाया गया कि OBC का कट ऑफ्स एंड EWS का कट ऑफ्स ऑलमोस्ट सिमिलर रहता है, राइट. एंड SC ST 5% और नीचे, SC is 5% below the EWS and OBC category. So 65 in English, 60 in DILR and 60 in quants. तो ये परसेंटाइल अगर तुम ले आते हो तो तुम फर्स्ट शॉर्टलिस्ट क्लियर कर लेते हो. You clear the first shortlist, right? So you come into the first shortlist. Of course, यहाँ पे जो नीचे लिखा हुआ है the scores of those called for interviews were higher. तो इसमें जितने लोग आते हैं सबको लिया जाएगा. तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर तुम देखो इसमें ये कैट में 85 परसेंटाइल ओवरऑल का जो लिस्ट है, 15% लोगों को 85 परसेंटाइल आएगा, 15% लोगों को, तो करीब ये 30,000 का लिस्ट बन रहा है. NCO मतलब बाय डिफ़ॉल्ट 30,000 लोग हैं, बट उसमें से सम पीपल विल फॉल डाउन. तो दिस लिस्ट माइट बी 15-20,000 पीपल लिस्ट हु आर shortlisted in the first shortlist, जिन्होंने तीनों सेक्शन कट ऑफ क्लियर किया. मेरे को 92 परसेंटाइल है लेकिन वर्बल में मेरे को 76 है, तो आई विल नॉट बी काउंटेड. सो लॉट ऑफ पीपल विल ड्रॉप बिकॉज ऑफ देयर फर्स्ट शॉर्टलिस्ट of the first shortlist only because they have not met the sectional criteria. ठीक है. उसके बाद this is the critical part that you are listening, waiting here to understand. For all candidates in the first shortlist as stated in table 1, तो जो भी first shortlist को clear कर रहे हैं, first shortlist में आ जा रहे हैं, the candidate percentage score in 10th and 12th board exam are initially adjusted by dividing each such score by the 90th percentile score in that board. Now this is a very important criteria जो IIM अहमदाबाद नहीं कर रहा था, कि तुम्हारा जो 10th का परसेंटेज स्कोर है, अब जैसे सपोज किसी ने बिहार बोर्ड से पास किया है और बिहार बोर्ड में स्कोर उतने नहीं आते जितना CBSE बोर्ड में आता है. तो बिहार बोर्ड में टॉप 10% लोग, लेट्स से CBSE बोर्ड में टॉप 10% लोग को 95% आता है,
बिहार बोर्ड में मान लो टॉप 10% लोग को 82 आता है, 90th परसेंटाइल पे जो है, मतलब ऊपर से, जो सपोज बिहार बोर्ड का एग्जाम 2 लाख लोग ने दिया, तो 20,000 रैंक जिसका आएगा उसको अगर 82% है तो इसको तुम्हारे स्कोर से कंपेयर किया जाएगा। तो तुम्हारा स्कोर, 10th का स्कोर इज एडजस्टेड बाय डिवाइडिंग ईच सच स्कोर बाय 90th परसेंटाइल स्कोर। सपोज दिस वाज 82 एंड यू गॉट 85, so your score will get adjusted by dividing 85 by 82, so you'll get a score of 1 more than 1 in this case। ठीक है, अगर तुम्हारा 82 है तो तुमको एग्जैक्टली 1 मिलेगा। और इसके लिए डेटाबेस कौन सा यूज कर रहे हैं? द डेटाबेस ऑफ 10th एंड 12th स्कोर्स ऑफ ऑल कैट एप्लीकेंट्स ऑफ द पास्ट 2 years is used for identifying the 90th percentile score for each 10th and 12th board for the purpose। That means बिहार बोर्ड को अगर वो देख रहे हैं तो बिहार बोर्ड में पिछले 2 साल में कैट में जितने लोग ने अप्लाई किया है उनका परसेंटेज स्कोर क्या था, उस पर देखेंगे। वो सब बिहार बोर्ड का पूरा डेटा तो उनके पास है नहीं, तो दे विल ओनली लुक एट द डेटा ऑफ द बिहार बोर्ड एप्लीकेंट्स ऑफ द लास्ट 2 years फॉर IIM बैंगलोर। ठीक है, तो उसमें तुमको, उसमें 90th परसेंटाइल पे जो है उससे तुम्हारा स्कोर कंपेयर किया जाएगा। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस इज़ अ वेरी गुड फीचर ऑफ IIM बैंगलोर कि तुम्हारा अगर ऐसा बोर्ड था जिसमें उतना परसेंट नहीं आता था जितना CBSE बोर्ड में आता है या कुछ साउथ के बोर्ड्स में आते हैं, तो इन दैट केस यू आर नॉट एट डिसएडवांटेज हियर बिकॉज दे आर कंपेयरिंग अनियंस विद अनियंस, दे आर नॉट कंपेयरिंग अनियंस एंड टोमेटोज हियर। ठीक है, तो an adjusted score is calculated for each of the candidates based on the final scores obtained by the candidate in his उसी तरह से बैचलर्स डिग्री में भी for all the candidates in the first shortlist is stated in table 1 and adjusted score is calculated। ठीक है, यहाँ पे भी एडजस्टेड स्कोर कैलकुलेट कर रहे हैं और बैचलर्स डिग्री में भी एडजस्टेड स्कोर कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो इसका भी प्रोसेस होगा, वो कैसे कर रहे हैं वो उन्होंने बताया नहीं यहाँ पे। और देन दे हैव गिवन अ वेरी डीप इंसाइट इनटू हाउ दे वांट यू टू they have given a deep insight into how they want you to इसमें थोड़ा दिक्कत हो गया मेरे फाइल में, but anyway, so they have given a deep insight into how they want you to actually look at your or present your scores and your marks etc। वो उन्होंने यहाँ पे वो किया है। स्मॉल इश्यू विथ माय डाउनलोड्स, फिर से मैं इसको खोल लेता हूँ। Where is my file? चलो, I think maybe I'll just open it from here। ठीक है, चलो, तो वंस दिस पार्ट इज डन, तो देन व्हाट डू दे डू? ये सब स्कोर्स निकालने के बाद क्या करते हैं वो, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड एंड देयर इज गुड न्यूज़ हियर, लेट मी टेल यू। ठीक है, वर्क एक्सपीरियंस को वो लोग कैसे मेजर करते हैं वो भी देख लो। वर्क एक्सपीरियंस को लोग मेजर करते हैं बाय गिविंग मार्क्स बिटवीन 0 to 8। work experience marks is given between 0 to 8। और वर्क एक्सपीरियंस का जो फॉर्मूला है 8x/36 है, वेयर x इज द नंबर ऑफ मंथ्स। तो अगर 0 है तो तुमको ऑटोमेटिकली 0 मिलेगा, 1 अगर है तुम्हारा वर्क एक्स का वैल्यू, 1 मंथ अगर है तो 8/36 तुमको वर्क एक्स में पॉइंट्स मिलेंगे, 0.2 मार्क्स के आसपास मिलेंगे। और अगर 36 है तो 8 into 36/36 विल गिव यू 8 मार्क्स फुल ऑन वर्क एक्स, पूरा मार्क्स मिल जाएगा तुमको वर्क एक्स पे अगर तुम्हारा 36 है।
इंपॉर्टेंट पॉइंट, 37 मंथ, 38 मंथ, 36 से ज़्यादा बढ़ गया तुम्हारा वर्क एक्स, कोई चिंता नहीं, तुमको 8 पॉइंट मिल जाएंगे उसमें. सो यू आर नॉट लूजिंग पॉइंट्स, अनलाइक IIM कोझिकोड जहाँ पे वो 36 मंथ्स के बाद तुम्हारा वर्क एक्स का वैल्यू 0 कर देते हैं. सो वो नहीं हो रहा है यहाँ पे. ठीक है. उसके बाद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट फॉर यू इज द वेटेज. तो वो पॉइंट यहाँ पे दिया है इन्होंने. अगर आप फर्स्ट शॉर्टलिस्ट में आ गए तो आपका जो स्कोर है उसका वेटेड पैरामीटर्स कैट 40%, 10th बोर्ड 20%, 12th बोर्ड 10%, ग्रेजुएशन 20, जेंडर डाइवर्सिटी 2 and work experience 2. So let's just make sense of this. 40% weightage for CAT, 20 for 10th, 10 for 12th, 20 for graduation, 2 for gender diversity and 8 for work experience. This is how 100 marks will be given to you, right? और ये 40 जो है इसका भी ब्रेकअप दिया हुआ उन्होंने. BRC का 14 है, DILR 16 है और क्वांट्स में 10 है. सो DILR को मैक्सिमम वेटेज देता है. 1 mark in quant is 1 mark in DI is equal to 1.6 marks in quant in terms of the percentiles. So and there is no other criteria. आगे देखोगे तो कोई और क्राइटेरिया नहीं है इनका. जैसे IIM अहमदाबाद ने डाल दिया था कि ये सब तो ठीक है लेकिन 80% के ऊपर चाहिए मेरे को 10th-12th में. ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है इनका. दे आर जस्ट सेइंग कि इस गेम को जीत के आप आ जाइए मेरे सामने, मैं आपको ले लूँगा. सो ऑल ऑफ यू देयर who are scoring poorly maybe in 1 or 2 of these. देखो, to be very frank, अगर तीनों में तुम्हारा ख़राब है, 10th, 12th और graduation, तीनों तुम्हारा बहुत ख़राब अगर है, तो it is slightly difficult to make up only on the CAT and work experience. Because कितने से हार रहे हो उस पर डिपेंड करेगा. मान के चलते हैं कि तुम्हारे एरिया में या तुम्हारे शॉर्टलिस्ट बनाते समय जो टॉपर्स हैं उनको 50 तो मिल जाएगा यहाँ पे, और तुमको मान लो अगर 33 से 40 मिल रहे हैं तो तुमको कैट के थ्रू उनको 15 मार्क्स से कम 15 पॉइंट से बीट करना पड़ेगा अगर तुमको वापस आना है उनके साथ, राइट. तो टफ तो हो जाता है. यू हैव टू स्कोर वेरी हाई इन द कैट, बट एट द सेम टाइम दे आर नॉट सेइंग दैट यू डोंट हैव अ चांस. So the best way to approach IIM Bangalore is score very high in CAT and hope that I hope that you don't have too much of a negative. अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं है यहाँ पे, मतलब जैसे 70s है तो चल जाएगा काम. बिकॉज अगर 70s-80s के रेंज में तुम्हारा है स्कोर तो ऐसा नहीं होगा कि तुम एकदम वाइप आउट हो जाओगे. ठीक है, अगर 50% है, 40% है, तब तो वाइप आउट हो जाओगे. 10th-12th ग्रेजुएशन में बहुत ज़्यादा मार्क्स दे दोगे. लेकिन नहीं तो क्या होगा, किसी 95-97 परसेंटाइल को 20 परसेंटेज वाले को 20 आएगा तो तुमको 15 आएगा. यहाँ पे 5 मार्क्स से हारोगे जहाँ पे तुम खराब परफॉर्म किए हो. 2 जगह भी खराब परफॉर्म किए हो तो 8 से 10 मार्क पीछे रहोगे ऑन द एकेडमिक्स. यू हैव अ चांस टू मेक इट अप हियर and you also have a chance to make it up by adding work experience after you graduate. And you also have a chance to make it up because a lot of you will be in graduation. You also have a chance of making it up by doing well in graduation. ये तीनों opportunities तुम्हारे पास है, तो use that opportunity and you are very likely to be able to break through and get that IIM Bangalore call. So there's nothing to be disheartened about IIM Bangalore, and it's obviously a great institute, my alma mater. To go this thing, it's a dream of a lot of you, and it does not close the doors on you. That's the message I wanted to give for you. The promo code you can use to join Unacademy Plus or the Unacademy Combat is this. You can use Sharma Cat Life as the promo code, and Ask a Doubt feature is there on Unacademy Plus, on Unacademy app. You can just post the question that you want with the subject, just a picture of the question, and you will get a solution to that doubt.
एंड कैट 21 का बम्पर ऑफर बाय डिफॉल्ट बम्पर ऑफर ये कि अभी अगर तुम लोगे यू जस्ट नीड अ 6 month सब्सक्रिप्शन एंड यू आर रेडी फॉर कैट 21. इट विल टेक यू all the way to CAT 21 and a little bit beyond. So this is something that you should try to look at and enroll now for the Unacademy Plus classes. These are teachers and various courses which are starting. Almost every week new batches start होते रहते हैं. So do join. And Unacademy Iconic is also available with personal mentor and test analysis and reports. A personal mentor from a top B school. Chalo, so I'll wind up then. Thank you so much. I hope you got something. The big message coming from here is that IIM Bangalore is crackable even if you don't have great academics. In a couple of your three out of the three situations, even if two of them, specifically 12th if you have not done well, 12th is only 10 marks. तो कितना भी हारोगे 2-3 marks से ही हारोगे वहाँ पे. 10th अच्छा है, graduation अच्छा है, 12th खराब है, you have a great chance to get to IIM Bangalore. दो जगह भी खराब है, CAT crack करके you can still get through. So they are not saying that we are not taking you if you are poor in academics. But yes, they will definitely give you advantage if you got that. So thank you so much. Everything in your hands. I'll wind up. Bye bye. Bye bye then.